Good morning to all. Dear students, today we are going to learn about lesson 1 of chemistry, that is matter in our surroundings. बेटा, जब हम कभी बात करते हैं इस वर्ल्ड की, इस यूनिवर्स की, तो वी ऑल वो बिफोर Almighty for creating this beautiful and wonderful world, also called universe. And the moment we open our eyes every morning and look at the surroundings, we are simply amazed by his creations, varying from very little to extremely large in size. They differ in shape, size, appearance, and texture. And a question which usually strikes the mind of every human being is to know about the constituents from which our beautiful universe is made. And an answer to our queries was given by our learned scientists, and they introduced a new term known as matter. And according to them, anything or everything which occupies space and has mass is called matter. And this word is used to cover all the substances and the materials from which the universe is made. For example, the air we breathe in, the food we eat, the clothes we wear, the houses where we live, and the water which is most essential for every living being. Clouds, stars, and different planets all represent matter. However, all of them have two things in common, that is, they occupy space or have volume and also have a certain definite mass. And in general, heavier an object, more is its mass. And since ancient times, scientists were eager to know the composition of matter or the different constituents of matter, and on the basis of researches carried on our religious books and scriptures, the Indian philosophers stated that matter is made from 5 constituents or tattvas. These are air, earth, water, fire, and sky. And the ancient Greeks excluded sky from the list. And the modern scientists have classified matter into two ways, that is, on the basis of appearance and on the basis of composition. The former, on the basis of appearance, is called physical classification, and the latter is known as chemical classification of matter. तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम क्या फोकस करेंगे? we shall focus our attention on the physical classification of matter and discuss the chemical classification in the next chapter. Okay, so on the basis of introduction, we may define matter as anything that occupies space, possesses mass, and the presence of which can be felt by any one or more of our 5 senses. For example, air. Air has mass and occupies space. एयर का क्या होता है? मास होता है और ये स्पेस ऑक्युपाई करती है. ओके, एंड इट कैन बी चेक्ड बाय फिलिंग अ balloon with air and weighing it. Gases such as ammonia, sulfur dioxide, though cannot be seen, their presence can be felt by their characteristic smell. Heat है, light है, sound, electricity and magnetism. These are not matter because they are massless and do not possess or do not occupy space. And vacuum also is not a matter since it neither occupies space nor has mass. Further, we can say that matter is made up of tiny particles. Examples: notebook, pen, star, sun, planet, air, etc. Next, characteristics of particles. Particles that form the matter are continuously moving. मतलब जो particles होते हैं जो किसी matter को बना रहे हैं वो हमेशा move करते रहते हैं. Second characteristic, they have space between them. उनके बीच में space होता है. And third, they attract each other. जो particles होते हैं matter में वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं. They attract each other.
नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब हम कंपेयर करेंगे कि किस तरह से वो मूव करते हैं। पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइज, पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। अब ये जो मूवमेंट है ये सॉलिड्स में मिनिमम होगी, लिक्विड्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी और मैक्सिमम होगी गैसेस में। Next, particles of matter have space between them. The space between the particles is minimum in solids, more in liquids and maximum in gases. As you can see here in this figure below, ये देखिए यहाँ पर ये solid state है, ये liquid है and this one is gas state. अब इसमें ये जो brown colored आपको particles दिख रहे हैं यहाँ पर, इनके बीच में देखिए space जो है interparticle space that is very less or we can say negligible आपको दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन liquids में अगर हम compare करें तो यहाँ पे particles के बीच में जो space है वो comparatively solids के comparison में ज़्यादा है, and in gases it is maximum when we compare these three states of matter. Third point, particles of matter attract each other. The force of attraction is मैक्सिमम इन सॉलिड्स। देखिए ये बहुत ही नज़दीक नज़दीक हैं पार्टिकल्स, तो इनमें जो अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज़ मैक्सिमम। लिक्विड्स में इंटरमीडिएट है एंड गैसेस में निग्लिजिबल है, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से। ओके, तो नाउ डिफरेंसेस बिटवीन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट वन, डेफिनेट शेप। सॉलिड्स आर हैविंग डेफिनेट शेप and liquids no definite shape and gases no definite shape. Second difference, in solids distinct boundaries are there, in liquids no definite boundaries and in gases no definite boundaries. Next point is solids are rigid and liquids are having fluidity in them and gases are also having fluidity in them. And incompressibility, that means solids are incompressible and liquids are having low compressibility, and in gases high compressibility, that is gases are highly compressible, they can be compressed. Next point, solids are having definite volume, liquids are also having definite volume, but gases are not having definite volume. Coming to next point, change of state of matter. How the state of matter get changed? By changing the temperature and by changing pressure. These two methods are there for change of state of matter. For example, solid, if we take ice, it is converted into water, that is liquid state, and then further it can be converted into vapors, that is gaseous state. These three states are interconvertible. And by changing pressure, we can say gaseous form, that is vapors, can be converted into liquid, water, and then liquid further can be converted into solid. And CO2, that is solid carbon dioxide, by lowering pressure it can be converted into gaseous carbon dioxide. As we can see in this figure, it is a solid, and here close packing is seen, and among the particles space is very low or very less, or we can say negligible, and attraction is very high, forces of attraction that is strong. But when compared with liquid, we can see interparticle space among these particles, and in gases interparticle spaces these are very large. तो क्या होगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी, यहाँ पर वीकेस्ट होंगी और यहाँ पर मीडियोकर होंगी.
नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंज ऑफ स्टेट। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो स्टेट ऑफ मैटर पे क्या असर होगा, क्या वो चेंज होगी? तो कॉमन एंड पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज change of ice into water. Ice is a solid and it gets converted into liquid. For this we have to do an activity. For this, take a beaker made of glass and put some ice cubes in it and hang a thermometer in it, and bulb should be in contact with the ice cubes. Then put a burner below, stir with the help of a glass stirrer, and uniform heating is done. Stirring ensures the uniform heating of the ice cubes in that particular beaker. Then we observe that as the temperature rises slightly, ice starts melting. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो आइस जो होगी, आइस क्यूब्स जो होंगे वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, एंड दे चेंज इनटू वाटर. Now at this stage we record the temperature. Okay, during the melting of ice, जब वो आइस पिघल रही है, till it has completely changed into water. आइस किस में कन्वर्ट हो रही है? वाटर में. तो यहाँ पर हम इस दौरान इसका टेम्परेचर जो है वो नोट करते हैं. As we can see in this figure, here it is a stand. This is stand and it is a Bunsen burner, this one, and it is tripod stand and rain gauze and wire gauze and ice particles here, ice cubes we can say, and water, then stirrer, and here thermometer is fixed to record the temperature. What we observe here, we observe that as long as ice has not melted, the temperature in the thermometer indicates a rise. जब आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू नहीं हुई है तो क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा थर्मोमीटर में वो एक लेवल तक बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, दैट इंडिकेट्स अ राइज. बट once the melting process starts, the temperature of the thermometer becomes constant till the whole of the ice melts. जैसे ही मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, और जब तक कि पूरा का पूरा आइस जो है वो पूरा वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक वो कांस्टेंट ही रहेगा. And we observe that there is no increase in temperature though the beaker is still being heated as before. तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि वेयर डज द हीट एनर्जी गो. हम तो उसको हीट करते आ रहे हैं अभी तक, लेकिन वो हीट एनर्जी जो हम दे रहे हैं उसको वो कहाँ जा रही है? तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन है, as long as ice has not melted, the heat energy supplied increases the kinetic energy of particles or water molecules which constitute ice. तो पहले क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए वो हीट जो है वो हीट एनर्जी यूज़ होती है. एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर राइजेस, जिसके परिणाम स्वरूप जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है. वंस द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस स्टार्ट्स, जैसे एक बार आइस की मेल्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो हीट एनर्जी is now consumed in bringing about the change in state from solid to liquid. अब जैसे ही मेल्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो हीट एनर्जी जो हम उसको सप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ यूज टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. इसका मतलब हुआ द हीट एनर्जी इज यूज्ड अप टू ओवरकम द
intermolecular forces of attraction present among the water molecules in ice. तो वो जो आइस के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हीट एनर्जी जो है वो यूज अप हो जाएगी एंड इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, इसीलिए वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा एंड दिस इज नोन एज लेटेंट हीट एंड विच मीन्स that it is in hidden form. Latent means hidden form as it is not possible. And in Greek latent means hidden. Latent का मतलब होता है hidden. And in case of solids it is known as latent heat of fusion. Fusion means melting. Then we can define latent heat of fusion. It is the amount of heat energy that is needed to convert 1 kg of a solid into the liquid state at its melting point temperature without any rise in temperature under atmospheric pressure, or we can say 1 atm, 1 atmospheric. तो for example, latent heat of fusion of ice is 335 kilojoule per kg. इसका मतलब हुआ this much amount of heat is absorbed by 1 kg of ice when it changes into water at its melting point temperature, that is 0 degree Celsius. And when lowering of temperature is done, liquid is cooled, particles lose energy and their kinetic energy decreases. They slowly come closer and interparticle spaces decrease. If lowering of temperature is continued, a state is ultimately reached when liquid changes into solid state and means freezing will take place. अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, melting point temperature of a solid that is equal to freezing point temperature of its liquid state means melting point of ice is equal to freezing point of water and it is 0 degree Celsius and pressure is 1 atmospheric. At 0 degree Celsius both ice and water exist together. Next topic here is scales of measuring temperature. Temperature is measured in by an instrument that is thermometer, and here in thermometer mercury is used. Now what about scales of measuring temperature? ये तो इंस्ट्रूमेंट हुआ जिसमें हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, लेकिन स्केल्स कौन सी होती हैं, किन स्केल्स में हम टेम्परेचर को मेज़र? वी कैन सी हियर there are 3 scales of measuring temperature. First one is Kelvin, second is Celsius and third is Fahrenheit. These 3 scales are after the name of the discoverer or scientist who discovered these scales. वी कैन से देखिए यहाँ पर केल्विन स्केल में नीचे वाला जो टेम्परेचर है दैट इज़ 273 केल्विन एंड अपर जो है 373 केल्विन एंड सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. We can say there are 3 scales of measuring temperature. First is Celsius scale और हम इसमें लिखते हैं डिग्री सेल्सियस. सेकेंड इज फ़ारेनहाइट स्केल, इसमें हम लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड थर्ड वन इज केल्विन स्केल जिसको हम लिखते हैं सिंपल कैपिटल के, नो डिग्री, डिग्री साइन यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है. एंड केल्विन स्केल इज़ नोन एज द एसआई स्केल. अब इसकी कैलिब्रेशन हम करते हैं. फ्रीजिंग पॉइंट जैसे मैंने अभी बताया, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल में 273 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 373 केल्विन. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम इन स्केल्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, दिस कैन बी इंटर कन्वर्टेड. तो डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस में अगर आपको टेम्परेचर दिया गया है तो आप उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे करेंगे? 9/5 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32
एंड अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया गया और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे प्लस 273.16, इसको कन्वीनियंस के लिए 273 भी ले सकते हैं। नाउ अगर आपको केल्विन में दिया है और आप सेल्सियस में निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दिस मच वैल्यू, और इधर अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये चीज़ मल्टीप्लाई, ये डिवाइड। ओके, now significance of melting point temperature, it gives us an idea of the interparticle forces which bind the constituents in a solid, and greater the melting point temperature, more will be the magnitude of intermolecular forces. For example, अगर हम सोडियम क्लोराइड को और मैग्नीशियम क्लोराइड को कंपेयर करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है मैग्नीशियम क्लोराइड का ज़्यादा है, ये 1260 केल्विन है, जबकि NaCl का 1077 है। तो क्या कंक्लूजन? इट मीन्स द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग आयंस ऑफ solid magnesium chloride are more than the ions in solid sodium chloride. Next, change of water into vapors. Solid ice is converted into liquid water upon heating, and if we raise the flame of burner and we go on stirring the water occasionally with the help of a stirrer, the temperature will gradually rise. टेम्परेचर जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा एंड वहाँ पर क्या होगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इस स्टेज पे द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर विल नॉट चेंज एनी मोर। सिमिलर होगा जैसे हम सॉलिड से लिक्विड बनाते बार देख रहे थे, एंड इट रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। Now question arises, what is the boiling point temperature? The temperature at which the liquid starts boiling or the liquid state of a substance changes into gaseous or vapor state. Example, the boiling point temperature of water is 100 degree Celsius or 373 Kelvin. तो सेम ऑब्जर्वेशन है, इंटरेस्टिंग टू नोटिस दैट इन द मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड एंड इन द बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड। इसका मतलब हुआ वंस द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इट्स टेम्परेचर डजंट चेंज ऑल्दो इट इज स्टिल बीइंग हीटेड। वैसे ही टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, हालांकि हम इसको हीट करते जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन भी इसकी सिमिलर है, एज लॉन्ग एज द लिक्विड हैज़ नॉट बॉइल्ड द हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिक्विड, एंड रिजल्ट क्या होगा, टेम्परेचर विल राइज। वंस द लिक्विड starts boiling, the heat energy is now being used to bring about a change in state from liquid to gas or vapors, and it is known latent heat of vaporization, and we can define it as the amount of heat energy that is needed to convert 1 kg of a liquid at its boiling point temperature into its vapor state without any rising temperature. And the latent heat of vaporization of water is 226 kilojoule per kg, and it is the amount of heat that is absorbed when 1 kilogram of water at its boiling point temperature, that is 100 degree Celsius, changes into vapor state without any further rise in temperature. Next is gas versus vapors. Gas, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे वेपर्स क्या होते हैं। वेपर, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द गैस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और इसके अलावा हम बोलते हैं फॉर द रेस्ट द टर्म गैस इज टू बी यूज्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, वी कैन यूज द टर्म वाटर वेपर्स एंड water vapors and alcohol vapors because both of them are liquid at a room temperature. दोनों ही रूम टेम्परेचर पे क्या हैं, लिक्विड्स हैं। However, it is not correct to use the term ammonia vapors और hydrogen vapors। हम ऐसा नहीं बोल सकते ये अमोनिया के वेपर्स हैं, हाइड्रोजन के वेपर्स हैं, because these are not liquids at room temperature
and both of them are both of them are gases in nature. ये दोनों ही gases की form में होते हैं. We must call these as ammonia gas and hydrogen gas. तो significance क्या है इसका? Just like melting points, the boiling point temperature of the liquids also help in comparing the magnitude or strength of the interparticle or intermolecular forces present in them. Greater these forces, more will be the boiling point temperatures of the liquid. And in general, low boiling liquids like petrol, either acetone, alcohol, etc. have weaker intermolecular forces as compared to high boiling liquids like water, carbon tetrachloride, etc. And the low boiling liquids are also known as volatile liquids. And effect of decrease in temperature on the physical state, जैसे गैस है उसको हम क्या करते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस अगर होगी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर फर्दर उसकी कूलिंग करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि फ्रीजिंग हो जाएगी. अब इसका कारण क्या है? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस डिक्रीजेस एंड इंटर पार्टिकल फोर्सेस इंक्रीजेस. We can see that a reversible phenomenon. It is a reversible phenomenon. Solid state on heating can be converted into liquid state, and then further if further heating is continued तो वेपर स्टेट आ जाती है. वेपर स्टेट को अगर हम कूल करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को अगर फर्दर कूल करेंगे तो सॉलिड स्टेट आ जाती है. ओके, तो ये रिवर्सिबल फिनोमिनन है. एंड डायरेक्ट चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन, एंड इट इज एक्सेप्शन टू अवर फिनोमिनन. सर्टेन सॉलिड्स होते हैं उनको हम हीट करते हैं तो वो सीधे ही गैस स्टेट में चले जाते हैं. तो हम डिफाइन कर सकते हैं सब्लिमेशन को, the change of solid directly into the gaseous state without passing through the liquid state upon heating is known as sublimation. For example, जैसे हम बोलते हैं नेप्थलीन बॉल्स होती हैं, कैम्फर होता है, कपूर जिसको हम बोलते हैं, कैम्फर, आयोडीन हो गई, अमोनियम क्लोराइड हो गया, तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस शो करते हैं. दैट मीन्स दे गेट सब्लाइम्ड. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज ऑफ स्टेट. प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है मैटर की जो स्टेट होती है उसके चेंज पे. चेंज इन प्रेशर, दैट इज इंक्रीज इन प्रेशर ऑल्सो ब्रिंग्स द इंटर पार्टिकल्स और द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस क्लोजर. As a result, interparticle space decrease, and at the same time the interparticle or intermolecular forces increase, and this leads to a change in physical state. तो इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखने के लिए वी टेक जार or a cylinder and we take gas in it and then apply pressure on it by a piston, and at low pressure the volume of the gas as well as interparticle spaces are very large. Under high pressure the gas gets compressed and the interparticle spaces become less and the interparticle forces become strong. As a result, the gaseous state may change to liquid state, and under very high pressure further decrease in volume occurs and interparticle forces become so strong and liquid state may change to the solid state. Next is scales of measuring the pressure. There are two scales mainly, that is atmosphere, normally हम इसको यूज़ करते हैं, and second is pascals, and we represent it as capital P and small a, and 1 atmosphere is equal to 76 centimeter and 760 millimeter, and 1 atmosphere that is equal to 1.01 multiplied by 10 raised to the power 5 Pascal. And the pressure at sea level is 1 atmosphere and it is regarded as normal atmospheric pressure. As we all know, Earth is having a blanket of air and it is about 800 kilometer thick and it is known as atmosphere, and in it air is present, that is mixture of number of gases, and due to gravity of Earth air is pulled towards the Earth, hence it exerts pressure on its surface, and this pressure is known as atmospheric pressure.
Now features, gas in a container. If we apply uniform pressure in all, it will create uniform pressure in all directions on the walls. And a liquid boils, then it will, when a liquid boils, it will also exert pressure on the surface. And atmospheric pressure, that is boiling point temperature of the liquid. And next, P, pressure and volume, they are inversely proportional and temperature is constant. So we can write these as P is inversely to B and V is inversely to P. And pressure is maximum at sea level, 1 atmospheric. As we go upward, as we move upwards, pressure decreases. And the instrument for measuring pressure is barometer, and it employs mercury. And interrelation of units, 1 atmosphere, that is ATM, it is equal to 76 centimeter mercury, and 760 millimeter mercury, it is equal to 760 torr के बराबर होता है ये. And it is further equal to 1.01 into 10⁵ pascals PA, and the normal pressure is taken as 1 atmosphere. अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल्स लें तो कुकिंग ऑफ फूड स्टफ्स इन प्रेशर कुकर एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का. And explanation, inside the cooker pressure is high and boiling point of water is raised and the cooking becomes quicker and more effective. Second है inflating tires of automobiles. If pressure of air is less in the tire, then it will get punctured, and in case pressure is in excess, the tire will burst. And opening aerated soda water bottles in summer, it is third example, and they can burst and due to high pressure inside. Next topic is solid carbon dioxide or dry ice. CO2 gas, it can be liquefied or even solidified at very low temperature and under high pressure. It looks like ice and it doesn't wet a piece of paper or glass, hence it is dry ice and it is stored under high pressure. If pressure on surface of solid carbon dioxide reduced to 1 atmospheric, it directly changes to the vapor state and without passing through the liquid state. This is the reason it doesn't wet a piece of paper or glass, hence its name is dry ice. And use of dry ice, it is used as a refrigerant and under the name dry cold. Next we can see interconversion of 3 states of matter. Here we can see solid state, this one liquid, and it is gaseous state. We apply here latent heat of fusion and solid is converted into liquid, then latent heat of vaporization, it will convert it into gases. Then on sublimation, it will gas will be converted into solid. Then solid will be converted into gas again by sublimation process. Gas will be converted into liquid by condensation. Then by solidification, liquid can be converted into solids. Next is critical temperature. Gas can be liquefied by increasing pressure and by either by increasing pressure or by decreasing temperature. And effect of decreasing temperature is more important. That's why for every gas there is a certain temperature over which the gas cannot be converted into the liquid state, that is liquefied. However, higher pressure you may apply. Similarly, critical temperature definition, क्या definition बनेगी इसकी? A particular temperature for any gas above which the gas cannot be converted into the liquid state even on applying high pressure is called critical temperature. Similarly, critical pressure, the pressure of any gas corresponding to its critical temperature is called critical pressure. Example हम ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का critical temperature is equal to 304.15 केल्विन, जो हम डिग्री सेल्सियस में लिख सकते हैं 31.15.
और क्रिटिकल प्रेशर जो है इसका, जो क्रिटिकल टेम्परेचर को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पर, दैट इज़ 73.9 एटमॉस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं ATM मीन्स एटमॉस्फेयर। तो इसका मीनिंग हुआ कि अबव 304.15 केल्विन टेम्परेचर द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।